Jazakallah for the info. Kafi, uh, we met last time and you gave me a very warm welcome again today. So, anyways, so we can go ahead with me having a short introduction. So this is the first time मैं आपके इस session का part हूँ. I would love to know the participants है, where do they come from and क्या backgrounds हैं. So I would love a couple of you here and there if you are willing to share कि आप लोग क्या करते हैं. And then the next question that I'm going to ask हमजा भाई, is, आपकी आवाज है ना थोड़ी सी ब्लर है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझने के लिए. कैन वी हैव सम माइक का कुछ कर सकते हैं क्या? मेरी भी आवाज नहीं आ रही है, बल्कि चैट में आया है. कोई दूसरे लोग कंफर्म कर सकते हैं क्या? Now is it audible? हाँ, आज अभी इट्स ऑडिबल. परफेक्ट. बट विजिबिलिटी नहीं है. Yeah. Better now? Yeah, better. Yeah. So I was saying this is the first time I have joined this session of yours and this wonderful community you guys are building. I would love to hear from a couple of people here and there कि आप लोग कहाँ से आते हैं, what education you've gained and what are you doing in your life, personal, professional life. And feel free to share. Second question after that is I want you to tell me what are your expectations. Very quick, 3-4 log just share what are your expectations from the next 1 hour. Great. Thank you, Mannan bhai. So if you're not open to sharing on mic, you can just put it in the chat box. We can read it. Mic access restricted है हमजा भाई. Probably we can chat. Yeah. Okay. Then just go ahead and share it on the chat. But okay, ठीक है, चलेगा. It would be better if we could have mic access. But ठीक है, we can go ahead. So very quickly, random people just shouting in. Yeah, civil engineering. Thank you, Mujahid bhai. And then also if NLP practitioner, yeah, cool. If people can just put in कि आप ये 1 घंटे से क्या expect कर रहे हैं. Child psychology, homeschooling, great. Want to homeschool kids? Yeah, true. I know that. What are your expectations? आप इस अगले 1 घंटे से क्या expect कर रहे हैं? So expect to know about schooling a kids. Okay, maybe. Voice is not clear. It's still not clear. Can other people give me feedback? Yes, clear. Okay, thank you. Expecting motivation to homeschooling. Okay, it is clear. It is clear. Thanks. Yeah. Anyone else? What are you expecting? How to teach our children? Okay. All clear. Great. Thank you. Insights on unschooling, great. So basically, I feel जो आप लोग सारों का expectation है, it's about homeschooling, unschooling, getting insights into schooling, and how do you teach your kids? That's what is evident. How to balance between school studies? Okay, great question. Great, wonderful. About child without any burden, educate our kids. Wonderful. So this is interesting. जो आपने जो points डाले हैं, and in fact now so many people joining in at this point of time on a Friday evening shows the dedication and also shows there is a dire need for this topic. So in a way, जब हम कह रहे हैं कि हम we want to look at homeschooling,
and we want to understand what is unschooling, and we want to get insights into these topics. ये बड़ा मजे का है कि हम खुद समझ रहे हैं कि ये चीज की नॉलेज हमको नहीं है, and we need to learn it, and we need to learn it from someone else. So basically what we're looking at today is not how to teach our kids, rather it is how to learn ourselves. And this is the primary crux of, I guess, why this community has been so vibrant over the last whatever time this has been running for. तो ये मजे की बात है कि आप लोग हर फ्राइडे जमा होते हैं एंड एक ही टॉपिक लेके कि हमको कुछ लर्न करना है. वी वांट टू लर्न समथिंग, वी वांट टू learn something new, get insights into what is happening. Maybe there are a lot of new parents जो homeschooling और unschooling को explore करना चाह रहे हैं. Maybe there are a lot of people who are frustrated from the modern education system and they want to get into better quality education for the future generations. So this is very interesting. Thank you. Nasir, can we have the PPT is live? Yeah, just a minute. So in the meantime, I would love if people could share what unschooling, what do you understand by unschooling? So आप लोग को unschooling से क्या समझ में आता है? That's the basic crux of what we're going to talk about today. तो आप लोग को क्या लगता है unschooling क्या होता है? Schooling at home, okay. Other than school, okay, great. Anyone else? Unschooling क्या होती है? Self-study, wonderful. Great. So yeah, thank you, Nasir. So as Nasir already said, I run this school called Pi Academy. It's been 18 months we've been running this setup, and today what I'll share with you is what we've learned so far over the last 18 months. It has been a very rewarding experience. बहुत ही मजे का experience रहा है. एंड बहुत ही पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला एक्सपीरियंस रहा है. तो हम जो लेंस से चीज़ों को देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई ओवर द टाइम. एंड व्हाट आई शेयर विथ यू इज बेसिकली सम लर्निंग्स फ्रॉम the near about infinite learnings we've got from this project that we've taken over the last 18 months. So yeah, as Nasir said, this is about Pi Academy. Nasir, next slide please. तो we start with the past. एक बहुत ही rich history है हमारे past की, which is very unrealistic. वो history unrealistic इसलिए है कि we've learned that Ali Raza Tanano, he accepted Islam when he was 11 years old. Then we've learned that Muhammad Fateh, his name was Fateh because उन्होंने फतह किया था, कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल को. जब उन्होंने फतह किया था तो उनकी एज 21 थी. And then very close to us is the Lion of Mysore, Tipu Sultan, जिनकी इतनी बड़ी rich history है, and he died at the age of 49. उनकी शादी 49 years की age पे हुई थी. So and he started his career at the age of 17. Does anyone think about this, and do you feel this is very unrealistic? मतलब 11 साल का बच्चा इस्लाम कबूल कर रहा है, 21 साल का बच्चा कुस्तुनतुनिया फतह कर रहा है. Like how is that possible? Do we think about that? Is it even possible? 17 साल पे टीपू सुल्तान Lion of Mysore बन रहे हैं, and then he has this whole vivid life he lives, and gets martyred at 49. 49 maybe, I don't know, but कुछ लोग यहाँ पे होंगे in that age bracket 49 के. We talking about more about the 11 years old and the 21s. लेकिन how do you feel about this? It's very unrealistic कि 11 साल की उम्र पे our own kids this mature that we accept Islam at the age of 11. There's a huge amount of thought process जो चल रहा है. बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा है. जिनको हम बच्चे कह रहे हैं वो बच्चे हैं नहीं, वो मैच्योर हो चुके हैं. एंड ये लोग जो है काफी कुछ कर रहे हैं in their own lives, but comparatively what people in today's life are doing is far more distant from their reality. So can we have the next slide? So this is the present.
we get a license at the age of 18 because the government thinks we mature at the age of 18. 18 साल से पहले बच्चों को लाइसेंस नहीं देंगे कि वो बच्चे हैं. मैरिज की एज ना 21, ग्रेजुएशन तक तो बच्चे ही होते हैं सारे, और ग्रेजुएशन की एज एवरेज एज 22 इयर्स की होती है, 21 22 चलती है. How do you think about this कि when Ali Raza Khan was accepting Islam at 11 and Muhammad Fateh is conquering Constantinople at the age of 21, or how we're not even allowed to marry, we're not allowed to have a license, we are literally treated as kids. Graduation में जब तक आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तब तक you can't do much. So this is the present that we are living in. यही सेम हाइपोथेसिस था जिससे हमने ये स्कूल स्टार्ट की थी. वी सेड कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग समवेयर, कि हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चे रह जा रहे हैं, और पुराने जमाने में जो पास्ट है, जो द गोल्डन हिस्ट्री दैट वी स्टडी अबाउट, उसमें यही बच्चे थे जो बहुत कुछ कॉन्कर कर रहे थे. यही उम्र के लोग थे जो बहुत ज्यादा मैच्योर थे. और and this is a very small list जो मैंने आपके सामने रखी है, but infinite number of examples we can take. सहाबियों के काफी सारे examples we can take, जो बहुत early ages में बहुत ज्यादा कुछ conquer कर चुका था उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों में, पर्सनल लाइफ में. इस्लाम के लिए बहुत सारी खिदमत की थी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू at a very young age. तो now the problem we realize कि हर कोई, हम समझ रहे हैं कि हर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कि it's possibly the school system जो हमारी maturity को delay कर रहा है. Now when we started the school, we went across the country and we learned from some of the best schools across the country कि वो लोग कैसे education को देखते हैं. तो unschooling was a very common phenomenon there. Yeah, the next slide please. So what you guys are looking for, तो unschooling एक नया तरीका of learning, and someone said a new way to teach our kids, someone said homeschooling, but for me unschooling literally means this proverb that I got from a professor in IIT Bombay. वो कहते हैं literates learn from the word. तो जो literates होते हैं वो किताब पढ़ के, lectures सुन के हासिल कर लेते हैं इल्म, लेकिन जो इलिटरेट होते हैं वो बेसिकली दुनिया से सीखते हैं. एंड इनका ये जो हाइपोथेसिस है, ही इज वर्कड हिज एंटायर लाइफ ऑन बिल्डिंग दिस, एंड ये ट्रेमेंडस है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल पॉइंट कि हम जो नॉर्मल समझ रहे हैं इल्म हासिल करने के तरीके को फ्रॉम अ स्कूल, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल. तो अर्लियर स्कूल्स वर नॉट लाइक the schools that we have right now. Earlier, in fact, even the madrasas were not like this. So the madrasa model that we have, we got the madrasa model from the British invasion of India, and that time it was India, Pakistan, Bangladesh. So जो हमारे current madrasa models हैं, this is also, we've adopted something from the Industrial Revolution. And the schools that we have right now, the schools are also part of the givings that Industrial Revolution ने दिया था. So this is basically a machinery जिसमें हम बच्चे डालें, and बच्चे जो है वो basically employees बने, and after a whole lot of 22 years of learning they come out as employees. In modern terms you call it modern day slavery, और गुलाम बनाने की एक machine है basically. Next slide please. So now I want you to think on an individual level, आप लोग सारे, कि how did you, if you go to a market या एक supermarket या एक mall या कोई भी, if you go to a doctor's place, how do you remember the route back to your house? How many of you wrote down, एक किताब कॉपी पे आपने लिखा था and put down exact address and कैसे right turn लेना है and left turn लेना है, and then you memorize that, and that's how you remember the route to your house? How many of you? It's obviously none. तो हमने घर का रास्ता तो ऐसे नहीं याद किया. And someone put down a point, landmarks. We definitely, we observe. हम सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे कि रास्ते पे क्या 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 हो रहा था, कौन सी दुकान थी, कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सा पेड़ था, कौन सा लैंप पोस्ट था, कहाँ से टर्न लेना था, कहाँ से यू टर्न लेना था, कहाँ से लेफ्ट राइट, एंड देन वी फाइनली रीच आवर हाउस.
This is how we basically learn, and ये अल्लाह ताला ने एक फितरी तरीके से हमको सीखने की एबिलिटी दी है. Next slide please. Now when I've said that, we also know कि हम जो एक learning का method अपना रहे हैं, that is very distant from the actual learning that we have. अब मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, जो आपका घर का रास्ता है, तो even 20 years later if you shift and you come back, will you still remember the route to your house? And the possible answer is yes. And उसकी वजह ये है कि you've lived that experience. You never wrote it down and learned it by heart. आपने रट्टा नहीं लगाया, आपने उसको actually live किया हुआ experience को. Unschooling भी एक तरीका है of living all those experiences and getting into those experiences, experiencing the world and then learning from the world. Unschooling जो है, what we've defined it at our place in Pi Academy, तो we put down some points, very critical points. तो इसमें आपको real world problem solving को identify करना होता है. तो हमारे जो बच्चे हैं 4th, 5th, 6th standard के, they actually work on the real world problems. For example, they're working on a problem regarding water right now. तो ये real world problem है, कुछ area में गंदा पानी आ रहा है, and they're working on it. They're talking to a lot of people, they're finding solutions, they're trying, they're experimenting. ये सारा कुछ real है, ये hypothetical नहीं, ये this is not part of your textbook, this is not part. Just a minute. आवाज थोड़ी जोर से हो सकती क्या आवाज? Is it possible? Yeah, I'll try. Okay. या probably थोड़ा करीब अगर आप कर लेंगे तो I think माइक आपसे ठीक हो जाएगा. सिंपल सोल्यूशन. Better now? हाँ, थोड़ी सी बेहतर है जी. Better? Let's continue. फिर कुछ हुआ तो we'll do okay. Okay. ठीक है. तो the next thing is it is very agency driven. तो हम जो कोशिश करते हैं, unschooling में एक बहुत primary fundamental होता है कि बच्चा जो है वो खुद से डिसाइड करता है कि कब क्या चीज कैसे क्यों पढ़नी है. एजेंसी पूरी बच्चे के पास होती है. तो हमारी स्कूल में ये नहीं होता है कि ये टाइम टेबल है, आपको ये अभी पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. The kids themselves sit down and they decide what is to be studied when. अब स्टडी जब मैं कहूँगा तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि कुछ लेक्चर होगा, कुछ किताबें खोल के पढ़नी होगी. तो लेक्चर भी नहीं होता अनस्कूलिंग में. It's completely inquiry based. Now what is inquiry based? Inquiry based is बच्चा उसकी खुद की जिंदगी में बहुत सारी चीजें on a very everyday basis experience करता है, and he has a lot of questions arising from that. अब इंक्वायरी होती है कि बच्चा जो है वो क्रिटिकली बहुत सारा कुछ सोच रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. अक्सर ये होता है कि हमारे पास वो क्वेश्चंस के लिए आंसर नहीं होता है, तो हम वो बच्चे को कहते हैं ठीक है, बाद में कुछ बहला देते हैं, कुछ और चीज में मसरूफ कर देते हैं, और हम उससे छुप जाते हैं, अपनी वो जिम्मेदारी से छुप जाते हैं. बट एक्चुअली होता क्या है कि हम ये रेपिटेटिवली करने के बाद हम बच्चे की क्यूरियोसिटी को खत्म कर देते हैं. बच्चे के अंदर एक इनबॉर्न क्यूरियोसिटी अल्लाह ताला ने रखी है, और वो जो है वो क्यूरियोसिटी आपने अक्सर नोटिस किया होगा, बच्चे को खिलौने हैं वो तोड़ के अंदर देखना चाहते हैं, कुछ किताबें हैं वो खोल के, बस पढ़ना नहीं आता फिर भी खोल के पेज पलटते हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, एंड दे वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग. दीवार है, दीवार में कोई खड्डा है तो उसमें अंदर आंख डाल के देखना है, कोई चीज उठा लेना है, कोई चीज देखना है, जमीन पे पड़ी हुई कोई चीज उठा लेना है, गार्डन जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ इंटरेक्ट करना है. ऑल ऑफ दिस हैपेंस. हम जो स्कूल में करते हैं वी इनकलकेट दैट प्रैक्टिस. तो वी हैव हमारे पास बुक्स हैं बहुत सारी, तो हम वी हैव मल्टीपल बुक्स ऑफ ऑल करिकुलम्स, IGCSE से लेके स्टेट बोर्ड करिकुलम की सारी बुक्स रखी हुई है. लेकिन बच्चे के पास जब सवाल आता है तो ही ओपन्स द टेक्स्ट बुक एंड देन ही स्टडीज फॉर हिमसेल्फ. एंड इन दिस प्रोसेस रिफ्लेक्शन और क्रिटिक करने की एक इनहेरेंट कैपेसिटी को वी कीप बिल्डिंग. तो और रिफ्लेक्शन जो है, unless and until you reflect on whatever you are doing and whatever you've done so far, जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बैठ के सोचेंगे नहीं कि हाँ मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं, जब तक आप क्रिटिक नहीं करेंगे, both critique to yourself and critique to other people who are suggesting something to you,
तब तक you will not be able to give a right direction to your approach. तो रिफ्लेक्शन और क्रिटिक भी हमारी स्कूल का एक इनहेरेंट process है that we are building with the kids. And then finally, we absolutely do not believe in modern day assessment in the terms of exams. जो बच्चों को एग्जाम्स लेके असेस करने का तरीका है, वी एब्सोल्युटली डोंट बिलीव इट, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा होता नहीं है कि आपको कैलकुलेटर ले लेंगे आपके हाथ से और फिर कहेंगे कि नहीं कैलकुलेशन करिए। जिंदगी में कभी ऐसा होगा नहीं कि आपके पास कोई गूगल या आज के ज़माने में हर चीज़ गूगल पे मिल जाती है, तो आपको कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और फिर वो आप अनलेस you have Google or unless you've read that in your textbook you don't remember it, तो आपने रट्टा जो आपका नहीं है वो आपके पास जब तक नहीं है तो आप you won't succeed. तो we have moved away from that era. तो we and हमारा assessment system जो है it is still all based on rote learning. हम कितना रट्टा लगा सकते हैं, हम कितना एग्जाम के दिन याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम के दिन तबीयत ठीक नहीं। तो वी एब्सोल्युटली डोंट बिलीव इन दिस असेसमेंट मॉडल। हमारा असेसमेंट मॉडल जो है वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का असेसमेंट मॉडल है, जिसमें हम बच्चे को क्रिटिकली एवरी डे असेस कर रहे होते हैं कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, वो पिछले दिन से ज्यादा लर्न कर रहा है कि नहीं, एंड पिछले दिन से ज्यादा लर्न करने के अलावा इज ही ग्रोइंग एट द पेस दैट ही कैन ग्रो। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी किड इज ग्रोइंग एट द सेम पेस, तो वो कस्टमाइज्ड होगा। एंड देन हु गेट्स टू असेस, तो हम असेसमेंट्स जो होता है वो प्रोजेक्ट्स जब इम्प्लीमेंट होता है तो कम्युनिटी को एंगेज करके रखते हैं, तो आसपास की जो कम्युनिटी है दोज पीपल देन कम एंड असेस दीज प्रोजेक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल दे वर्किंग ऑन वाटर राइट नाउ, तो एनीवन एंड एवरीवन रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम वो लोग आएंगे और वो शेयर करेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छी होती, एंड ये चीज़ बहुत बढ़िया बनाई हुई आपने। So these are things that that are the assessment model for us. The next slide, please. So now I want to bring you guys to the point that Allah Ta'ala, at multiple instances, there are more than 13 instances, 13 different types. Allah Ta'ala keeps inviting us to think. How many of us, in our busy lives, I come from Bombay, तो मेरी life तो बड़ी busy होती है, हम तो दिन में 3-4 घंटा traveling में लगा देते हैं। In our busy lives, at least I can say that I have very little time to sit down and think. How many of you think, how many of you feel you think enough as much as it is required to think? Anybody can say confidently that you guys think a lot? So we can move to the next slide. Out of the 13, I've put 3 here. Allah Ta'ala says in the Quran, Afala tatafakkarun, don't you think? Next slide. And then he says, Afala tadabbarun, do they not reflect then? Then the next slide. And then he says, Afala taqilun, don't you use your wits? Don't you have senses? This is very strong. Allah Ta'ala repetitively says these things. कि क्या वो सोचते नहीं है, क्या वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्या वो अपनी अकल नहीं लगाते हैं? How many times do we see something and observe it and then critique it and maybe use some learnings out of it? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, दैट्स कॉल्ड सेरेंडिपिशियस लर्निंग। तो सेरेंडिपिशियस लर्निंग का मतलब ये होता है कि वी गाइस मूव आउट एंड हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि वी गो आउट टू लर्न समथिंग, but instead of learning that, yeah, maybe we do learn that, but in the process of learning something we fall upon something else and we learn that. At times it is also called ilham. Allah Ta'ala ने वो इल्म आपके ऊपर वो वक्त पे उतार दिया, so it's called ilham also, but in modern terms it's called serendipitous learning. वो aha moment होता है, ओ ये चीज अब समझ आई, तो ये वाला भी एक तरीका है, बट ये aha moment हमारी जिंदगी में बहुत कम होता है। पुराने जमाने में जो हकीम लोग होते थे, जो हिकमत कैरी करते थे, वो लोग के पास ये वाला इल्म बहुत सारा होता था, क्योंकि दे यूज्ड टू सिट डाउन एंड पॉन्डर ओवर इट। वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की होती थी उसको अप्लाई करते थे, उसको क्रिटिक करते थे, उसको सोचते थे और उस पर कुछ चीजें बिल्ड करने की कोशिश करते थे और फिर वो आहा मोमेंट आता था। हमारे साथ क्या होता है मॉडर्न एजुकेशन में,
everything is about information. Nothing is about the application of information. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा एक फ्रेंड है, वो जर्मनी से वापस आया. तो जर्मनी में यूनिवर्सिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक्स, तो वहां पे सिर्फ पढ़ाई होती है. एक सेकंड टाइप की यूनिवर्सिटी विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, तो वहां पे एक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होती है. तो इट्स इंटरेस्टिंग कि हम मॉडर्न टाइम्स में एक ये दौर पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, उसमें एप्लीकेशन नहीं होगा, और फिर एक मॉडल होगा जिसमें हम अप्लाइड पढ़ाई करें. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वी स्टिल डोंट हैव अ लॉट ऑफ अप्लाइड एजुकेशन. हमारा जो एजुकेशन है वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन वाला है, इंफॉर्मेशन के लेवल पर रुक जाता है. अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इज दिस कि अल्लाह ताला इज गोइंग टू आस्क अस अ क्वेश्चन कि आपको ये इल्म दिया था तो आपने उसको कहाँ यूटिलाइज किया. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट कि हमको अल्लाह ताला ने जितना सारा इल्म हमने हासिल किया हमारी स्कूलिंग लाइफ में, हमारी कॉलेज लाइफ में, हमारी ग्रेजुएशन वाली कॉलेज की लाइफ में, वेयर हैव वी सैट डाउन एंड अप्लाइड इट. एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस इल्म जो हम कह लें, दीन का इल्म. दिस इज ऑल्सो अबाउट द दुनियावी इल्म, कि हम कितनी बार हम बैठ के ये सोचते हैं कि हमने वो जो इल्म हासिल किया था उसको हम अप्लाई कहाँ करें. And Allah Ta'ala is going to ask us that. He says himself कि he's going to ask us. तो वो Allah Ta'ala definitely पूछेगा कि आपको ये इल्म दिया था तो आपने अप्लाई कहाँ किया. तो we need to sit down and think about how do we apply that knowledge. Next slide, please. So we'll move to the idea of learning. Next slide, please. So we'll go to the foundations. सबसे पहले से शुरू कर लेते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कर लेते हैं. तो अल्लाह ताला क्या करा आदम अलैहिस्सलाम को कि हमने तुमको सारे चीजों के नाम सिखाए, अस्माउ कुल्लहा. Now when he says kullaha, that means absolutely everything. There is no ifs and buts. सब कुछ. तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ऑलरेडी, हमारे अब्बा को ऑलरेडी सारा कुछ सिखा दिया. हमारे अब्बा को सारा कुछ मालूम है ऑलरेडी पहले से. And then next slide, interesting, is another concept कि अल्लाह ताला says, एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर बच्चे को फितरत में पैदा किया, और फिर उसके माँ बाप हैं जो उसको नजूसी, नसरानी और यहूदी बनाता है. तो ये दोनों कंसेप्ट्स को अगर हम सोचें तो दिस इज गोइंग बैक टू द फाउंडेशंस, टू द फंडामेंटल्स, कि इल्म जो है अल्लाह ताला ने हमारे, ठीक है, ही टॉट आदम अलैहिस्सलाम एवरीथिंग, जो सारा कुछ इल्म दे दिया. और फिर इतना इल्म दे दिया कि फरिश्ते जो अल्लाह ताला को कह रहे थे कि आप ऐसे ऐसे मखलूक को क्यों पैदा करें जो जो फितना क्रिएट करेगी, वो फरिश्ते फिर सजदे पे झुक गए कि उनको भी वो चीजें नहीं मालूम थी जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई. और फिर हम ये पॉइंट पे आए कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हम बच्चों को फितरत पे पैदा करते हैं और उनके माँ बाप हैं जो उनको फितरत से दूर करते हैं. ये दोनों कंसेप्ट जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग है. अब आप सोचिए कि बच्चा बात करना कैसे सीखता है, या बच्चा चलना कैसे सीखता है, या बच्चा सांस लेना कैसे सीखता है, या बच्चा खाना खाना कैसे सीखता है. क्या हम उसको सिखाते हैं कि वो खुद से सीख जाता है? हम डेफिनेटली एक एफर्ट लेते हैं उसको सिखाने की. हम बच्चे को, हमने हमने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, एक वॉकर बनाया है जिसमें बच्चे को डाल देते हैं और बच्चा चलना सीख लेता है. लेकिन क्या बिना वो वॉकर के बच्चा सीख नहीं पाता? या क्या हम बच्चे को सांस लेना सिखाते हैं, या क्या बच्चे को हम बात करना सिखाते हैं, या वो खुद से सीख रहा होता है? तो एक पेडागोजी है जिसका नाम है डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी. वो एक एक्सट्रीम पे चली जाती है. वो कहती है कि हम जिस बाय टॉकिंग, जिस बाय बात करने से हम अपने बच्चों को हर कुछ सिखा सकते हैं, सारा कुछ. मतलब हम 10वीं की पढ़ाई तक भी हम सिर्फ बच्चों के साथ बात करके, उनके साथ एंगेज करके, उनको चीजों के बारे में बात करके, उनको चीजें दिखा के वी कैन टीच देम. इट्स कॉल्ड डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी. यू इफ समवन इज इंटरेस्टेड वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. बट ये जो प्रिंसिपल है, ये बेसिकली कहता है कि हमारे पास सारा इल्म है ऑलरेडी, इट्स समवेयर इनसाइड अस, एंड जो भी हमारे सराउंडिंग्स है इट्स ऑलरेडी देयर. और हम जो है फितरत में, हम नेचुरल हैं, नेचर है.
and we learn on our own, and it is our parents who interfere और हमारे वो learning process जो है, वो जो हमारी फितरा है, उसको खराब कर देते हैं. So this was one principle that we started building our school on, and we said the first thing is we need to learn, and the best way of learning is through observing children. बहुत सारे instances हैं. I can just keep talking about instances where we almost every day basis पे our kids play around, experiment with things and keep learning. But this is the crux of the entire learning process. तो आपको हैरत होगी बात सुनने की कि no pedagogy is the pedagogy we follow in our curriculum. कि हम कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल बेस्ड तरीका नहीं अपनाएंगे जिसमें हर बच्चे को सीधा बैठ के पढ़ना है. तो वी हैव बेड्स एट आवर प्लेस, जिसको सो के पढ़ना है, जिसको लेट के पढ़ना है, जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिसको जाके सो जाना है. जब आपको पढ़ना है ठीक है, आप आके पढ़ लीजिए. एंड मोस्ट ऑफ द पढ़ाई इज थ्रू डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू एक्चुअली मेकिंग प्रोजेक्ट्स. तो ये सारा कुछ वी गॉट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, now we've got to realize कि हमारे पास दो तरीका है इल्म हासिल करने का. फर्स्ट इज द प्राइमरी सोर्स, सेकंड इज ऑब्वियसली सेकेंडरी थिंग. प्राइमरी में क्या होता है कि हम जो है लर्न जो करते हैं वो अपनी 5 सेंसेस से लर्न कर रहे होते हैं. थ्रू आईज. इफ समवन कैन जस्ट पुट डाउन द 5 सेंसेस, can someone put down the 5 senses? Great. So thank you. तो हम जो है देख के, सूंघ के, स्मेल करके, टच करके, टच एज इन फील करके, we and taste करके, we learn all of this, and this is practically the only thing that we need for learning anything on planet Earth. Secondary knowledge जो होती है वो होती है, वो बुक वाली पढ़ाई होती है, या वो होती है ओरल वाली पढ़ाई जो आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी ने आपको बता दिया कि उसने एक्सपीरियंस किया. दैट इज सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, एंड दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन. दैट इज नो मोर योर एक्सपीरियंस, इट इज समवन एल्सेस एक्सपीरियंस. इट बिकम्स इंफॉर्मेशन फॉर यू, एंड ऐसा लगता है कि वो आप एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू समवन एल्सेस 5 सेंसेस. अब ये जो सेकेंडरी वाली जो पढ़ाई है, दैट इज in a way not your own experience. Most of the textbooks that we have are not textbooks that are made by the kids, and most of the textbooks that we have are standardized textbooks. So this textbook, the NCERT textbook or the ICSE or the IGCSE textbook, are made in Delhi, and that might not be relatable to a small town of Baswa Kalyan, Hyderabad, या एक रूरल प्लेस इन महाराष्ट्र, या एक एक्सट्रीमली रूरल प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट या केरला. इट माइट नॉट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस फॉर द किड्स देयर, बट क्योंकि हमने सारा कुछ स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, इट इज नॉट कस्टमाइज्ड, तो हम किसी और के एक्सपीरियंसेस को अपना एक्सपीरियंस समझ के we want to utilize that as a learning tool, and we want to utilize it as a learning resource. इसमें ये होता है कि बच्चे जो है बिल्कुल भी उनके लिए रेलेवेंस नहीं है. अब मैं खुद कहूँगा कि मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो मेरी इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रेलेवेंट नहीं थी. मे बी इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ रेलेवेंस, और मे बी इट वाज पुट देयर बट इट वाज आउटडेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रेलेवेंस नहीं होने की वजह से माई कंप्लीट इंटरेस्ट टू लर्निंग दोस कंसेप्ट्स वो चला गया. ऐसे ही कुछ होता है हमारे बच्चों के साथ. जब हम बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ा रहे होते हैं जो बच्चे उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, बस उनको पढ़ना होता है क्योंकि उनको पढ़ना कहा गया है, तो वो उनके लिए बिल्कुल भी एक बहुत ही ग्लूमी एक्सपीरियंस होता है, अनइंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So I've done enough of talking now. Now I want you to bring all of this thought process and we'll do a small workshop. How much time do we have, Nasir? So I was told 35 minutes. I'm already up for 35 minutes, but
Again, I'll just take 5-7 minutes more. We'll do a small. We have, again 7 minutes है. उसका 7 question answer session we can start. Great. Thank you. So in this workshop, we will do it very fast. I just want you to, अगर आपके पास notepad है, phone है, if you are logged in, you can use the chat box also. It's better you don't use the chat box, but you just write down somewhere. Pen paper है तो just keep writing down. I want you to write down anything that you feel is circular. कोई भी चीज आपको लिखना है, कोई भी चीज जो आपको लगता है सर्कल है, and you have 1 minute timed. So just write down anything that you feel is circular. आपको हर वो चीज लिखनी है जो आपको लगता है गोल है, जिसमें गोलाई है, वो चीज का नाम आपको लिखना है. जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक बॉटल लिख सकते हैं. दस सेकंड और हैं. So time's up. Now the question is, आप लोग में से कितने लोग के पास 10 से ज्यादा चीजें हैं? Anyone with more than 10 objects जो आपने लिखे हैं, जो anyone with more than 5, 5 objects से ज्यादा? 7, great, wonderful, great. 10, wonderful. Can you put down all the 10, ma'am? How many more than 15? ऐसा कर सकते हैं. Can everyone type down how many items you have written down? Okay. आप लोग कितने आइटम्स लिखे? नंबर ऑफ आइटम्स लिखे. 5, 6, 10. 9. Thank you. 8. Thank you. 10. Thank you. 5. 11. Wonderful. 8. Great. Thank you. So now, आप लोग को मैंने कहा था कि आप just about anything आप लिख सकते हैं. Now I want you to look around in your rooms. आपके रूम में घड़ी होगी, आपके रूम में पंखा होगा, आपके रूम में स्विच बोर्ड होगा जिसमें प्लग होल्स होंगे जो सर्कल होंगे, आपके रूम में कोई शर्ट होगा, किसी ने शर्ट पहना होगा जिसमें बटन्स होंगी, बटन्स में बटन होल्स होंगे, प्लेट्स होंगे, कप्स होंगे, सॉसर्स होंगे, just about anything. Like मैंने 10 सेकंड में 10 से ज्यादा गिना दिए. But you see how blinded we are कि हम continuously we try and think instead of observing. So we don't observe कि क्या लिख सकते हैं and then start writing. मैंने जब आपको कहा कि आपके पास 1 मिनट है तो आपने कटाकट लिखना शुरू कर दिया होगा instead of actually observing what we can write and thinking about what we can write and then writing it. So this is exactly how we've become. हम बिल्कुल भी तदब्बुर तफक्कुर कोई चीज नहीं करते, हम बस कुछ आ गया कर देते हैं. Now I want you to learn this method. ये जो मैं बहुत ही quickly करूँगा वापस से with you guys. इसको कहते हैं एक trigger based approach for thinking. तो अब मैं जो है आपको again you have to write down things that are circular, लेकिन मैं आपको triggers दूंगा इस बार. तो मैं आपको कुछ words बोलूँगा, उससे related अगर आपको कुछ circular समझ में आता है तो आपको लिखना है. तो we'll start again and we'll time it again. तो आप लोग को circular हर वो चीज लिखनी है जो vegetable है.
हर वो चीज जो सर्कुलर है और ज्वेलरी है, हर वो चीज गाड़ी से रिलेटेड जो कि सर्कुलर है, गाड़ियों से रिलेटेड, हर वो खाने का आइटम जो सर्कुलर है, हर वो प्लांट से रिलेटेड चीज जो सर्कुलर है, हमारी बॉडी में इटसेल्फ हर वो चीज जो सर्कुलर है. So we stop here. Now I want you to count how many things you have written. And now if you can put down numbers, आप लोग अगर numbers डालें कि how many numbers do you have? 17, wonderful. 12, 15, 15, 11, 20, someone put down 15, 14, 14, 12, 16. Wonderful. Does everybody notice कि there is an increase in the number of items that you could think about? जबकि मैंने टाइम आपके कट डाउन कर दिया और भी कम किया मैंने टाइम. पिछले टाइम आपको 1 मिनट पूरे दिए थे, ये टाइम और भी कम किया. But in the same amount of time and the same things that you had to write down, circular things, just because मैं आपको trigger देते जा रहा था continuously, so you could think about more things. जो thought process हमारा अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो exactly ऐसे ही कुछ काम करता है. हमने जो किया है हम उसको curtail करते हैं और उसको रोक लेते हैं और उसको limited कर देते हैं, and we don't let ourselves think about anything and absolutely don't ponder and reflect exactly Aisha ma'am. We basically just keep doing things and बिल्कुल उसी तरीके से चीजें करते रहते हैं और बिल्कुल we don't break down the status quo and we say कि ये हमेशा से ऐसी की जा रही थी, that's why we are still doing it, and this is a very flawed concept of thinking in a very positive way. So I leave you with this. Can we move to the next slide? I leave you with the final listing. We'll end on Surah Fatah's last ayat, which is very crucial, I feel, with a lot of modern day parenting, which says कि उनका description is like a plant, और प्लांट को एक ग्रो करने में वो एक फास्ट प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें आप जो है ले जाके पत्ती लगा दें, चिपका दें, या उसको खींच के लंबा कर दें, या और कोई चीज कर लें. इट विल टेक टाइम. बट हम क्या करते हैं, वी फील द नीड टू स्पीड अप एवरीथिंग, और हम एक जमाने में जी रहे हैं जहाँ हर चीज स्पीड से कैलकुलेट होती है. तो वी वांट स्पीड 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 इन लर्निंग, स्पीड इन गैदरिंग information. To all those people who are looking down to homeschool their kids, I want you to forget about the learning outcomes जो एक स्टेट बोर्ड के हैं या एक सेंट्रल बोर्ड के हैं, and just slow down the entire learning process. वो पूरे learning process को हमको slow down करना है and उसको concrete बनाना है. I'll just put one more study. एक study है US में which says कि all the learnings that a kid has, he forgets 3 months after the exam that he gives. तो एग्जाम देने के 3 महीने में वो सारा कुछ भूल जाता है. तो हमारी जो लर्निंग हो रही है थ्रू आउट आवर स्कूलिंग, वी इवेंचुअली फॉरगेट इट, एंड मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू दैट कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा था हमको नहीं याद होगा. हार्डली 10 साल में 10 पेज भर का भी हमको याद नहीं होगा. तो वी नीड टू स्लो डाउन आवर लर्निंग एंड मेक इट मोर कॉन्क्रीट. इंस्टेड ऑफ स्पीड we have to concentrate on the content. And I'll leave you with this. अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि पौधे की तरह एक स्लो प्रोसेस में हमको उनको बढ़ाना है, ग्रो करना है, एंड वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. इट हैज टू बी अ वेरी enlightening experience. It has to be a very reflective and critical journey for the kids.
इट हैज टू बी, हम जब स्कूल में हुआ करते थे एक सब्जेक्ट था SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क. तो इट हैज टू बी सोशली अवेयर, इमोशनली अवेयर. आपके जो बच्चे हैं वो कल के लीडर्स बनने वाले हैं. अल्लाह ताला खुद हमको कह रहा है कि आपको खलीफा बना के भेजा है दुनिया में. तो हम जो बच्चों को रेस कर रहे हैं उनको खलीफा बनाना है हमको. और खलीफा बनने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स जो मॉडर्न डे एजुकेशन नहीं दे पा रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर. I have one last slide if you can just play it. So I would want people who've sat down for a good 1 hour now and heard me speak so much. I would want people to share some of their learnings. The last slide, please. जस्ट अ सेकंड. फीडबैक का पोल स्क्रीन पे आ गया है, तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट में आप वो पोल फिल कर दीजिए फीडबैक का. जस्ट 4 क्वेश्चंस है इसमें, आप वो फिल करिए, देन वील जंप राइट बैक टू द प्रोग्राम. एक्चुअली पोल स्टार्ट हो गया हमजा भाई, so we'll wait for this. No issues. तो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. अगर नजर नहीं आ रहा तो सामने लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है ना, आपको एक 3 बार्स दिखेंगे, 3 बिल्डिंग दिखेंगे, तो उस पर क्लिक करिए, आपको खुल जाएगा. अगर आप लोग फिल कर चुके हैं तो चैट में एक थम्स अप डालिए. और आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस भी है तो वो भी चैट में डालते रहिए. इंशाल्लाह एज सून एज वी फिनिश दिस हम उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह. मुजम्मिल, पोल नहीं नजर आ रहा है. कैन यू फीडबैक के लिए आप फिर से कर सकते हैं? मुजम्मिल, मुजम्मिल हाँ, कॉल. ट्राई कर रहा हूँ. हाँ ठीक है. मुजम्मिल, अगर नहीं हो रहा तो कैन वी शिफ्ट इट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम? Yes, sure. ओके. हमजा भाई, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कंटिन्यू. Yeah, great. Thank you. So मैंने सेशन के बीच में आपको serendipitous learning की बताई थी. How many of you had such an experience through the last 1 hour that I was speaking कि आपने कोई ऐसी चीज नोटिस की या आपको कुछ इल्हाम हुआ या आपने कुछ ऐसा रियलाइज किया कि ऐसा भी अच्छा, ऐसा भी कोई लर्निंग होती है या कोई लर्निंग आपको ऐसे मिली? प्लीज गो अहेड एंड शेयर दैट इन द चैट बॉक्स भी चलेगा. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, बट इफ यू कैन जस्ट गो अहेड एंड शेयर इट इन द चैट बॉक्स दैट वुड बी ग्रेट. ओके. अच्छा, कोई अगर वॉइस में पूछना चाह रहा है क्वेश्चन तो हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट करेंगे इंशाल्लाह. और क्या कहते हैं, 30 सेकेंड्स के अंदर आपको अपनी बात रखना है. अच्छा, एक हैंड रेज हुआ है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ. ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुझे लगता है कि मतलब हमें स्टूडेंट्स को गौर और फिक्र करने पे यानी तदब्बुर और तज़क्कुर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो तदब्बुर और तज़क्कुर करें और उन्हें कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद आगे चल करके क्लियर हो.
थैंक यू। वालेकुम सलाम, थैंक यू। और कोई बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस करिए या चैट में भी डाल सकते हैं। अच्छा माजिद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी Am I audible? हाँ, ऑडिबल है। Sir, the session was great, Hamza sir. ये पूछना था मुझे, आपके जो पाई एकेडमी है उसके बारे में, can you tell more actually what it is and how it works? So a lot of people have been asking, so we've not been very good at documenting what we're doing right now. Although हमारे पास एक YouTube page वगैरह है, so I'll just share it with Nasir. He can then post it in your group. So if you can make any sense out of it. So Pi Academy is basically a school. I'll just give you a brief. Pi Academy एक school है, which was born out of realizing the need of schools. हमारी academy जो है बॉम्बे में based है, और वी वर्क विद अंडर प्रिविलेज किड्स इन बॉम्बे, एंड हम हमारा पूरी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू लर्न करें। तो हमारा साल जो है 4 प्रोजेक्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्वार्टर्स होते हैं, और हर क्वार्टर में हर 3 महीने के बाद उनको एक प्रोजेक्ट डेमो डे होता है, एक एग्जीबिशन होता है, जिसमें वो कुछ कम्युनिटी बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट होता है उसको शेयर करते हैं और कम्युनिटी के लोग को बुलाते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी वो लोग सारा कुछ काम कम्युनिटी के साथ मिलकर करते हैं। तो बहुत सारे सर्वेस करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चनर्स बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट से बात करते हैं। तो अब हमारे 4th 5th 6th के बच्चे जो हैं वो गोदरेज के इंजीनियर्स के साथ मिलके ये समझने की कोशिश करें कि वो पानी से रिलेटेड जो गोदरेज में जो भी काम हो रहा है वो कैसे है। तो गोदरेज से एक इंजीनियर आए थे एज अ कंसल्टेंट। फिर बच्चों ने एक मॉडल बनाना था जमीन का, पूरा जो पानी जो जमा होता है हमारे पास बॉम्बे में, वो बॉम्बे में बहुत सारी लेक्स हैं बॉम्बे के आसपास, हमारा पानी पूरा पाइप पानी आता है, हमारे पास पाइप से पानी आता है, गवर्नमेंट म्युनिसिपल पानी जो है। तो वो पूरे मॉडल को स्टडी करना था, तो उन्होंने एक अर्बन प्लानर जो एक आर्किटेक्ट है उनके साथ एक कंसल्टेशन किया। तो ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशन होते हैं, फिर ये वीकली रिपोर्ट सबमिट करते हैं। बहुत सारा कुछ इसके बीच में वर्कशॉप्स होती हैं। एवरी फ्राइडे हमारे बच्चे जो है खाना बनाते हैं। बहुत सारा कुछ बाहर हमारी 4 दीवारी से बाहर लर्निंग्स होती हैं। हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली वी कीप विजिटिंग प्लेसेस। जैसे अब डैम के बारे में सीखना है तो हम डैम एक्चुअली जाके देखेंगे कि डैम होता कैसा है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट इन अ टेक्स्ट बुक। अगर हमको एक वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखना है तो हम उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो there's a lot I can just keep going on and on and on, but it's better मैं नासिर के साथ I'll share it and then he can just update it with you guys. और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस चैट में आए हैं हमजा भाई। जी तो इज इट अ पैरेलल मॉडल? तो पैरेलल तो मैं नहीं कहूंगा, अब ऑल्टरनेट कह सकते हैं इसको, बट आवर किड्स, द किड्स दैट कम टू अस डोंट गो टू नॉर्मल स्कूल्स देन, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस एंड मैथ। हमारे पास जो सारी पढ़ाई है वो सारी कुछ प्रोजेक्ट के बेस होती है। अब फॉर एग्जांपल पानी है जो ईस्ट क्वार्टर में काम करना है, तो पानी के बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस पढ़ेंगे, पानी आइस एज से लेके अभी तक पानी के बारे में क्या क्या हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें कावेरी का पानी जो कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा है, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा पानी पे इंडस के, चाइना और इंडिया का झगड़ा ब्रह्मपुत्र के पानी पे, ये सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड मैथ्स, जो हम डिस्कोर्स ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, बात बात करके पढ़ाना चाहते हैं। तो बट हमारे बच्चे जो है वो फुल टाइम हमारे पास होते हैं। स्कूल की टाइमिंग्स बहुत वियर्ड है, आपको साउंड करेगा वियर्ड। मॉर्निंग 7:30 से रात में 9:30 तक होती है। हम बॉम्बे में हैं तो बोर्डिंग स्कूल थोड़ा अफोर्ड करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए डिफिकल्ट है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ बोर्डिंग स्कूल। तो दिस इज द मॉडल। होम स्कूलिंग तो नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड हमारा ज़्यादा कुछ पढ़ाई जो है वो
अंडर प्रिविलेज सेक्टर में होती है, अंडर प्रिविलेज सेक्टर को केटर करें, और उसमें वी डोंट वांट द किड्स टू बी एट होम अ लॉट ऑफ टाइम्स. इट इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक फॉर अस कि उससे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स कम होती हैं, बढ़ती हैं, बट वी स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट पॉइंट. बट हमारे पास रिजल्ट जो है हमारे पास ऑल द बेटर हैं. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्रॉमा में थे व्हेन दे वर लिविंग एट होम. छोटे घर होते हैं बॉम्बे में, और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं विच दे नॉट फेसिंग राइट नाउ. तो अक्सर बच्चे हमारे पास जो वैसे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट लुक एट होम स्कूलिंग प्रैक्टिकली. Is there any branch in Bangalore? बल्कि No, सवाल we don't have any branches so far. We've learned from a lot of people in Bangalore. I can definitely get you connected. एक आनंद सागरा एक school है, तपस एक school है Bangalore में. There are a lot of schools which are kind of almost on our level. हमारा बस एक hypothesis different था. We wanted to start this school, and बाकी सारी जो ऐसी alternate schools होती हैं, they are high end schools, upper middle class को cater करने वाली. We started this school with a hypothesis that we can cater the lower middle class and lower class also in the same budget. No branches so far. Absolutely. बोर्ड एग्जाम फ्यूचर है उसके लिए है ना, क्या कर सकते हैं? ये ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था. जी बोर्ड एग्जाम का हमारा मामला ये है कि 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड फॉर नाउ इज इन अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट, बट हमारे नासिर हैज सीन इट इन फैक्ट हिमसेल्फ कि हमारे जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो एट टाइम्स इंजीनियरिंग की बुक्स भी पढ़ रहे होते हैं. इन द रिपोर्ट्स दे राइट, हर वीकली जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उसमें उनको उनके पूरे हफ्ते की लर्निंग्स को लिखना होता है, और वो पूरे हफ्ते की लर्निंग्स को लिख के उनको अपनी लर्निंग की सोर्स को भी लिखना होता है कि ये चीज आपने कहाँ से पढ़ी या कहाँ से सीखी या कहाँ देखी. तो उसमें अक्सर हमारे पास जो बिब्लियोग्राफी होती है रिपोर्ट के एंड में, उसमें आता है कि कोई इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक से पढ़ ली, कोई मेडिसिन की टेक्स्ट बुक से पढ़ ली, एंड दिस इज 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के. अगेन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक फॉर अस. तो हम वी डोंट look at Islam and the world in that manner, literal manner. तो हमारी सारी पढ़ाई जो होती है वो it revolves around the concept of Allah Ta'ala and everything that Allah Ta'ala has given us and made for us, and the entire universe. तो हम exactly the point I was trying to highlight in the workshop, in the session that I took, कि अफला तफक्करून and अफला तदब्बरून वाले concepts पे. So when we go out and we see a dam, so we ponder over why the dam was built, एंड अगर वो डैम नहीं होती तो पानी बह रहा होता. In fact, just very recently, when Nasir was visiting us, तो one of the kids हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे करेंगे. तो एक बच्चे ने, सब बच्चे आइडिया लगा रहे थे कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे, बकेट में डालेंगे, अंडरग्राउंड डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे. एक 4th स्टैंडर्ड का किड था हमारे पास, उसने ये सवाल रेस किया कि अगर हम सब पानी हम लोग खुद जमा कर लेंगे, रेन वाटर, एंड उसको समुद्र में नहीं जाने देंगे, तो वो चिड़िया और जो बाकी सारे जानवर हैं, वो कुत्ते बिल्ली, वो उन सबको पानी कहाँ से मिलेगा. तो दिस इज बेसिकली हम ये प्रिंसिपल बिल्ड करना चाह रहे हैं, एक अल्लाह ताला के अराउंड रिवॉल्व करने वाला, एक हसास, खुदा की आइडेंटिटी से हसास, एंड वेरी सोशली इमोशनली वेरी वेल लर्नड वो. तो ये सारा कुछ प्राइमरी क्रक्स है उसका. As far as languages are concerned, तो Arabic एक language है, we teach our kids. तो वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में होती है, एंड डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक एनवायरनमेंट तो नहीं है, मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेस कोड वगैरह, बिकॉज वी हैव अ वेरी लिबरल ड्रेस कोड. स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होता, चिल्ड्रन आर अलाउड टू वेयर व्हाटएवर दे वांट टू. But yes, हम नमाज साथ में पढ़ते हैं, we learning the Quran also together. So these things we keep doing. So hope I answer that question. A very good question, but yeah, that's how we look at it.